हैं जो मास्क का जो क्रिएट किया था वो सब मैम स्क्रीन चले गया शेयर है करके एक्चुअली। दिखाना चाहोगे? यस मैम, यस मैम, यस। सुरजीत का तो हम आज करने वाले हैं वैसे भी बाकी केक्स के लिए, बट आई वुड ओके, वांट ओके। टू सी व्हाट इज द डाउट यू हैड, मतलब कलर आ ही नहीं रहा था मास्क का या चेंज हो रहा नहीं, था? पहले पहले क्रिएट क्रिएट किया था, जब हाँ। रिड्यूस कैटरिंग ऑप्शन यूज करने से पहले। फिर जब ओके। मैंने अभी रिड्यूस कैटरिंग ऑप्शन यूज किया तो काफी टाइम लिया, इसके बाद आ तो गया था, लेकिन कलर जो था, जो मास्क क्रिएट किया था, वो सब नहीं है। वो हाँ ओके ज्यादा तो सब तो क्लियर नहीं नहीं कर दिया? नहीं 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 मैम, क्या मैम, होता है ना, साइड साइड नहीं नहीं में, हाँ। नहीं नहीं मैं ओके। बताती हूँ। मैनुस। हाँ, बिफोर रिड्यूस कैटरिंग एंड आफ्टर रिड्यूस कैटरिंग आपका जो पिक्सल का हाँ। वैल्यू होता है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके ओके, ओके। जो बिफोर रिड्यूस कैटरिंग के मास्क है वो आपके आफ्टर रिड्यूस स्कैटर वाले स्कैन को अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने आप ओके, क्लियर ओके, हो जाएंगे। ओके, ओके, ओके। तो हमें इसीलिए दोबारा से व्हेन, क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ आपको फिर वो सब वापस दोबारा से करना पड़ेगा, वो सेम चीज आप ओके, अप्लाई नहीं कर सकेंगे प्री क्रिएटेड मास्क पर, क्योंकि आपका ओके। जो तो अगर उसको, आपने बॉर्डर्स देखे रहेंगे ना वो थोड़े यस चेंज मैम, हो जाते हैं। हाँ वो स्कैटर यस जैसे मैम, रिड्यूस होता है, पूरा यस मैम, वैल्यूएशन, हाँ HU यस मैम, जो हाउस स्पीड यस वैल्यूज मैम, वो चेंज हो यस जाएंगे। मैम। तो हम उसको डिलीट करके दोबारा से, जो पहले से जो बने हुए हैं उनको, मास्क को डिलीट करके दोबारा से नए मास्क बना सकते हाँ राइट, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो उस पर एप्लीकेबल हैं। नहीं यस, होता है बेसिकली। यस मैम, यस, ठीक है। यस। यस। Anybody else wants to ask anything? एंड रिड्यूस कैटरिंग जनरली टेक्स टाइम, तो इसीलिए यस मैम। जो आपको दो विंडोज आते हैं ना वो आपको इसीलिए रहता है ताकि आपको तभी विजुअल, कभी कभी कैसा होता है ना कि आप रिड्यूस कैटर अप्लाई करो उसके बाद भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपके मास्क पर, मतलब यस मैम। अ, वो आर्टिफैक्ट रिडक्शन हार्डली कुछ होता है। एंड दैट्स द रीजन ओके, बिफोर ओके। रिड्यूस कैटरिंग ऑलवेज आपको दो विंडो आएंगे, एक आपका जो एक्चुअल व्यू का विंडो रहता है वो, और एक जो दूसरा यस मैम। विंडो रहता है वो आपको बताता है हाँ, कि हाँ, हाँ। आपका रिड्यूस कैटर होने के बाद कैसा दिखेगा। So this is like a ओके, general ओके। information for everybody. So first go through ओके, that window that will be your probable scan after reduce scatter. If it is applicable, only then go ahead. Otherwise, you will have to use the manual methods that like multi-slice edit or single slice editing that I showed. यस मैम। पहले ऐसे भी कर सकते, रिड्यूस कैटर ऑप्शन यूज करके फिर मैनुअली अपने आप भी कर सकते राइट राइट, हाँ हैं। क्योंकि थोड़ा आप कितना भी रिड्यूस स्कैटर अप्लाई कर लो आपको थोड़ा ना थोड़ा मैनुअल एडिशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यस, एकदम क्लियरली बॉर्डर्स नहीं लेता है वो। यस, ठीक। Ma'am, has everybody joined? Should I begin today's session? Yes, please. Okay. So I hope everybody has their training module with them, जो मैंने ग्रुप पे भेजा था, because you can parallelly use that as your guide. I'm going to do exactly the same tools and the steps that I have created in the module. So in case there is, you don't, I'm a little fast maybe, or if you are not able to understand, you can always go back to the training module, read through it. आपको, and if you still have any difficulties, you can always ask, right? So I'll begin the presentation. Is my screen visible? Not yet, it is buffering. Buffering. Okay. Yes, yes, Is yes. it visible right now? Yes. Yes. Okay. So हम लोग पहले तो as we did yesterday, we'll first import the files. So today we're going to use the patient data for Surjit Kumar. So I'm going to click on the DICOM, import it.
So Surjeet Kumar as a scan had multiple sets. So I can now show you कि आपको जब बहुत सारे sets Hello. रहेंगे, आप कैसे choose कर सकते हैं कि आपको कौन सा scan लेना है. Okay. So now, as you can see, there are multiple sets of scans available. So we will first. So generally, what we do is we check the characteristics of the scan. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी हम लोग क्या देखते हैं, स्लाइस थिकनेस देखते हैं, स्लाइस इंक्रीमेंट देखते हैं, उसका रेजोल्यूशन देखते हैं, रोज एंड कॉलम्स देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली देन वी चूज अ स्कैन. सो एज आई सेड, जितना कम स्लाइस थिकनेस उतना बेटर होता है स्कैन. तो इफ आई सी माई फर्स्ट स्कैन जो ब्लू में हाईलाइटेड है, उसका फिलहाल स्लाइस थिकनेस 1 है. The same applies for the next. When I click on this MCAN, what you can see is the slice thickness is 1. So I think for every all the scan, the slice thickness remains safe. So the second criteria, okay, for this is 2. The slice thickness value is 2. So I'm going to reject this because when I have a a scan of lesser slice thickness, it is always preferable to choose that. Now, how do I differentiate between the other remaining scans, right? So what I will do is I will then see the number of images in each. So two criteria. One, the slice thickness has to be as less as possible, and second point is the number of images should be higher. So based on that, I'm going to select the first two scans. I'm going to untick the remaining scans. I'm now going to convert both the scans. जब practice किया, all of you, कुछ any difficulties, any queries you had in the other scans? Did you do the tutorials from Mimics?
हेलो मैम, आज का भी रिकॉर्डिंग Yes. कर लीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए। होगी, हो रही है। यस यस हाँ हाँ, यस। मैंने रिकॉर्डिंग, ओके। हाँ 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 हाँ। Okay, so we finally have a scan. So today we had imported two scans. तो अगर आप images project management में, मैं आपको पहले बताऊंगी कि आपको अगर दोनों अपने कौन से scan sets लिए हैं वो देखना है, तो this is your project management. Under the image tab, you will have your patient name, the first thing. When you click on the drop down arrow, आपको दिखेगा study, और study के नीचे आपको दोनों आ जाएंगे options. आप करके दिखाओ। तो as per your convenience. हाँ मैम, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन कर्सर ले जाओ उस जगह पे, कहाँ इतने बड़े कर्सर में ढूंढना है ना, तो इट टेक्स टाइम। हाँ, yes ma'am. See images. Then I click on the drop down arrow. I have study. Then these are the two scans that we incorporated in this project. स्क्रीन हैंग What है, you कुछ can नहीं do दिख is, रहा। दिख नहीं रहा। एक सेकेंड हाँ, मैम, मैं स्टॉप, एक सेकेंड स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैम अभी विजिबल है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन नहीं आया अभी, अब आ गया। एक सेकेंड। ओके, आप, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, वो दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर, हाँ, यस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो में अब यही इमेजेस प्रोजेक्ट भी दिख रहा है। मैनेजमेंट टैब में, हाँ। हाँ, अभी आप इमेजेस क्लिक करेंगे तो हम्म, आपको सबसे पहले आएगा उसका पेशेंट का नाम और उसके डिटेल्स। ठीक है, आप ठीक। ये एरो को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो को, तो आपको हम्म, दिखेगा स्टडी। आप उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर, ये स्टडी के अंदर आपने कौन से स्कैन्स लिए हैं वो दिखेगा। हमने हम्म, फेस 1 H70S लिया था और J30S लिया था, तो वो दोनों हम्म, दिख रहे हैं। अभी अगर ठीक है। मुझे इन दोनों में से चेंज करना होगा, so हम्म, I will left click my arrow and just drag this scan on this. If you can see, I'm just dragging it over the axial view. ओके। तो आप देखिए अभी जो ये ब्लू एरो है, हाँ, ब्लू मार्किंग है, ये नीचे वाले में आ गया। So this is how you can ओके, toggle between the scans. ओके, ओके, ठीक है। So yes. So once you decide, आप जैसे ही पहले तो आप स्कैन को रीड करेंगे, आप दोनों स्कैन्स के बीच में आप यू विल अंडरस्टैंड which one you want to go ahead with. I am taking this H70S scan and going ahead with that, right? यस। So once I have finally decided on my scan, now what I will do is I will create a mask, because I would want to isolate the bony components first. So I'm going to go to mask.
I'm going to create a new mask. So if you can see, based on this predefined threshold sets, bone CT is always selected, right? तो ये bone CT के हिसाब से ये scan ने लिया है. So what I will just now do is, मैं एक बार scan को अपने से scroll down, scroll up करूँगी. So I know that the software is taking the right margins. If not, then I will have to make manual changes to it. जैसे मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने इसको थोड़ा आगे किया है. Instead of 226, I have shifted the value to 290, minimum value to 290. So today what we'll do is we'll also realize the parameters कि आपको ये keep largest और fill holes कब use करना है. So what I'm going to do is, first mask I'm creating without checkboxing these fill holes and keep largest. तो आप अगर देखेंगे सीटी में, तो पेशेंट का जो बेड आया है वो भी आया है. इफ यू कैन सी माय कर्सर मूविंग. जो मैंने मास्क बनाया है उसमें some part of the bed section has also come in the CT, right? So this is one mask. Now what I'll do is I will select a mask, and what I'll do is I'll select keep largest and fill holes, and I'm going to okay it. बेड का पोर्शन आया ही नहीं है. The software has auto selected the largest component in the scan, that is your cranium, the maxilla, mandible and the spine. And जो अगर आप green color में highlighted देख रहे हैं साइड में उसका बेड है, वो पार्ट उसने मिस आउट किया है. But what you will also see is that the scan has also missed. अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे coronal view में, I'm just highlighting the coronal view, patient का scapula भी उसने मिस किया है. I'll just highlight it. Here, if you can see, it is in green. ये येलो मास्क में आया नहीं. तो keep largest का कैसा होता है ना, that when you know that the bone that you want to segment is the largest section in the scan, you can always go ahead with it and use keep largest and fill holes. Otherwise, it is ideal to first create the entire scan, recreate the entire scan using a mask, and then as per your choice, you can use the other segmentation option. Now, what I will do is, using the green mask, I will show कि अगर आपको एक कोई particular region isolate करना है, तो आप वो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले we will use the region grow option, right? So what is region grow does is, आपके स्कैन में बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, राइट? और इंटेंसिटी के हिसाब से आपके पिक्सेल्स वेरी होते रहते हैं. I'll just hide this. Some pixels are very similar in their value, as we call the grayscale values, to each other. तो रीजन ग्रो क्या करेगा, सिमिलर पिक्सल वैल्यूज के सारे कंपोनेंट्स को वो आइसोलेट करेगा एक साथ एक कंपोनेंट में, बट प्रोवाइडेड दीज पिक्सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? सो आई विल शो यू एन एग्जांपल. मैंने ये ग्रीन मास्क चालू किया, मुझे ये बेड को आइसोलेट करना है इससे क्रेनियम से. आई सिलेक्ट ऑन ग्रीन रीजन ग्रो. My source mask becomes green because that is the mask I want to work on. My target is a new mask. I will want to keep my original mask as it is so I can compare. I would want it to be on multiple layers because आपको single layer तो isolate करना नहीं है, आपको multiple layers, आपको पूरा bone एक साथ isolate करना है एक different mask में. So I will switch on multiple layers and I will keep. So what is connectivity? मैंने कहा था ना, जैसे region grow आपको जो connected pixels है एक scan में, जो सारे connected pixels है उसको isolate करने में help करेगा. So if you select 6 connectivity, तो एक single pixels के 6 corners के हिसाब से जो जो part connected है वो उसको isolate करेगा. 26 connectivity is, it will consider the connection at 26 points of the pixel. So basically 6 connectivity and 26 connectivity is the point of connections
that the software will consider while isolating the mask. So now what I'll do is I would want to isolate the cranium from the rest of the parts. So I will just click on the cranium, anywhere in the cranium, I will click. So if you can see एक नया cyan mask ओके कर दिया मैंने. If you now see एक नया cyan mask create हुआ है. And even in this mask you don't have the scapulas and the bed. But you also observe that यहाँ पे जो hypothalamus था वो भी यहाँ से निकल गया है. So any pixel that was not connected to the region I had selected on the scan has been removed from the new mask. So now I want to visualize कि ये कैसे दिख रहा है. तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगी? I will go and calculate a 3D of this. So I go to calculate part. I select that मुझे cyan mask को select करना है and मुझे quality high चाहिए. So I've selected high and okay. Where is this calculate part? Q. I'm on right hand side. Q. मैम आप segment हाँ ठीक है, दिख गया. टैब में ये जो लास्ट हाँ आइकॉन दिखेगा एक स्क्वायर शेप वाला. हियर कैलकुलेट. हाँ राइट हैंड साइड. ठीक. yes. और उसका एक शॉर्टकट भी है. अब वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टैब आपको दिख रहा है उसके नीचे लाइन में आप देखेंगे एडिशन है, क्रॉस है, इरेज है. वहां पे भी एक स्क्वायर बॉक्स वो जैसे कैलकुलेट पार्ट वाला ना उसका आइकॉन बना हुआ है ना, कैलकुलेट पार्ट. तो ये पार्ट बन गया. आई जस्ट जूम इन. मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगी and you can see that this is the cyan mask. Yes. So now what if I want to crop my mask? What if I temporal region? So now what we can do is the other option that we can choose is to crop the mask. So I'll let you know कि crop. I want to separate the spine from the cranium, maxilla and mandible. So what I'll do is I will click on crop mask. Right? आपको अगर दिखा होगा तो there's this gray bounding box जो एक बन गया है. I hope everybody can follow that gray bounding. What now you have to do is you have to manually. अगर आपको देखना है तो आपके वो 3D मॉडल पे भी ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा रहेगा आपको. तो द ग्रे स्क्वायर दैट यू सी इज नथिंग बट अ बाउंडिंग बॉक्स. बेसिकली आपका स्कैन या आपका मास्क अभी ये पूरे रीजन को कवर कर रहा है. व्हाट नाउ आई विल डू इज आई विल मूव दिस बाउंडिंग बॉक्स. सो इफ यू वांट ऑब्जर्व द चेंजेस, मैं ये हटा देती हूँ. यहाँ पे आपको दिखेगा कि तीनों बॉक्सेस, तीनों विंडोज में ये मूवमेंट हो रहा है. यू कैन सी दैट इट इज मूविंग इन द एक्सियल. यू कैन ऑल्सो सी दैट वो कोरोनल में भी मूव करेगा. So I'm just moving it in such a way that my spine is, as much of the spine I can remove, I will try to remove, but making sure that मेरा mandible कहीं नहीं miss हो रहा है इसमें. So once I set this, now what I'll do is I will scroll through the mask and check कि कहीं पे मेरा mandible नहीं गया है ना. So this seems fine. I would want to reduce certain section from the top region also, तो मैं वो भी कम कर दूंगी थोड़ा. Just supraorbital arch तक रख रही हूँ मैं. So I'm reducing this. Then I'm going to move this. और lower region पे भी मैंने कम किया है. So once I've set my bounding box and I know कि मुझे इतने regions ही चाहिए मेरे scan में, and I've marked my final bounding box, what I will do now is I will click OK. One important thing to remember before clicking on OK is crop mask duplicate नहीं करता है. तो आपका जो cyan mask है
अगर मैं इसको ओके करूंगी तो वो हमेशा के लिए एडिट हो जाएगा. यू विल नॉट हैव अ कॉपी ऑफ दिस मास्क एज बिफोर. तो आपको अगर एक सपोज आपको एक चाहिए कि आपका जो पुराना मास्क था उसको आपको रेफरेंस के लिए रखना है, तो देन यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ द मास्क. व्हाट यू डू इज यू क्लिक ऑन द मास्क, यू राइट क्लिक इट. मैं इसको कंट्रोल जी कर लेती हूँ पहले. Yes, so now I undid my last procedure of cropping. Since I would want to keep this as a reference so that I can show you कि crop के पहले crop के बाद कैसा लगता है, मैं इसको duplicate करूंगी. What I did is I right clicked on the mask. I have a number of drop down options out of which I select duplicate mask. तो आपका same mask का fuchsia करके duplicate हो गया. So what I'll also do is I'll rename the mask. जैसे मैंने कल बताया था आपको, मैं इसको crop करके save करूंगी. Crop test1. You can save it as per your understanding. So now what I'll do is I'll again first select the mask that I want to crop on, then go to crop mask. मेरा बाउंडिंग बॉक्स जैसे मैंने पहले सेट किया था वैसे सेट ही है, तो मैं बस ओके कर दूंगी. So now you can see the difference between the cyan mask and the crop mask. And now I'm going to calculate this again so that we can visualize it better. मैं जूम इन कर रही हूँ यहाँ पे. तो अगर आपको दिख रहा रहेगा, यू कैन सी अ फेंट फूशिया कलर ऑन द सैन मास्क इटसेल्फ. दैट मीन्स वी हैव कट दैट मच सेक्शन. तो अगर आपने देखा रहेगा तो आपका काफी सारा स्पाइन इसमें निकल गया है. राइट. But now what if you want to segment the maxilla and the mandible into two different components altogether? आपको उसको दोनों को अलग अलग मास्क करना है. तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? स्प्लिट मास्क. But before I proceed to split mask, is there any doubt till this section? Do you have any queries? Do you want me to repeat any step or highlight any other point? Anything like that? Please let me know. I think it is clear. Clear, ma'am? Okay, ma'am. Yeah. Then I'll move forward. So now our aim is to segregate the maxilla from the mandible, right? So for that, we will use something called as a split mask option. It's a very convenient option, and the best part about it is कि आपको सिर्फ थोड़े slices पे ही वो draw करना है. बाकी scan आपका auto generate या auto interpolate कर लेता है. So again, always remember your first step will be to select your source mask. मैंने segment tool tab में से split mask को select किया है. Right, my selection is the crop test one. And split mask क्या करता है? आपके single mask को, as the name suggests, split करता है into two different masks. तो अगर आप देखेंगे तो आपका region A है और region B है. I can also keep adding to this region C. तो आपको अगर जितने अलग अलग सेगमेंट्स में आपके मास्क को डिवाइड करना है, आप उतने सेगमेंट्स में आप यहाँ पे एडिशंस करते जा सकते हैं, एंड देन यू कैन कीप ड्रॉइंग ऑन इट. So what I will do is I will do this into 3 segments. Crop test 1. So my region A will be my mandible. I'll rename it here itself. My region A will be my mandible. My region B will be the maxilla. And my region will be the small जो spine का छोटा सा पार्ट रह गया था, वो मैं इसमें सेगमेंट कर दूंगी. ठीक है. So I'm going to first click on my mandible. And आपको अगर एक स्क्रीन पे zoom on the coronal view to draw. You can select any of the view. I am comfortable with the coronal view, तो मैं coronal view में draw कर रही हूँ. But आप axial पे या sagittal पे draw कर सकते हैं. और the other way of giving the best input is आप तीनों view में mark कर सकते हैं. So split mask does not necessarily have to be restricted to one view. It can be done in all the 3 views as per your convenience.
So I'm going to first go into my coronal view. मैं क्या कर रही हूँ, मैं मास्क को बंद कर रही हूँ और मैं सिर्फ मैंडिबल को पहले हाईलाइट करूंगी. So let me shift this so I can show you better. Right. So using the blue marking, I'm going to mark my mandible. Understanding the borders is very important. आपको borders का बहुत ध्यान रखना है जब आप marking करेंगे. Right. So this is my mandibular section. I've marked it. Then what I'll do is I'll go to the maxilla. I will mark the maxillary section. So again, here I'll do the marking. I will first select the mandible. Try and incorporate. Then I'm going to select the maxilla. You can adjust the brush diameter from here. So since I know that my maxilla is a bigger region, what I'll do now is I will just increase my brush size and mark it using a bigger brush. What I want you to now observe is, if you can see, I've already marked the blue region as mandible. In case I'm double clicking on it, आपने देखा रहेगा कि इसका जो डायमीटर है ब्रश का वो ब्लू मार्जिन पे भी स्पिल ओवर हुआ है. बट इफ यू नोटिस आपका ब्लू रीजन इंटैक्ट है, उसको कुछ हुआ नहीं है. So what the software does is it considers your blue marking as your main important part. Any part that is followed, आप उसके बाद के जितने भी मास्क बनाओगे वो क्या करेगा, आपके ब्लू मास्क को होली ग्रेल कंसिडर करेगा. इसका मतलब ये है कि आपके बाकी मार्जिन पे आप ओवरलैप कर सकते हो. So suppose I'm taking the blue mask and clicking over this region, it will let me superimpose that. But वही मैं पिंक मास्क को ब्लू पे superimpose करने जाऊँ तो वो नहीं करने देगा. So basically your blue mask is considered your most important mask. Anything cannot be superimposed on it. The remaining masks are considered your secondary mask. So आपको अगर उसमें चेंज करना है, एडिट करना है तो आप कर सकते हैं. The other option is कि आपको अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने गलती से, I'll change other slide, मैंने गलती से ये पैरामीटर में, I know this is the mandible but I by mistakenly selected this in the maxilla region itself. What I can then do is I can go to the mode and select erase. I can erase this section. So आपको पास दोनों modes है, select and erase. Now I'm going to move to my select region again and again mark my maxilla and mandible. मैं zoom in करने वाली हूँ थोड़ा सा so that I can mark the pixels correctly. Zoom in का ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर के साइड पे मिलेगा, right? Now I'll shift to maxilla. I'll just increase the dia. I will now zoom out and mark the remaining part of it. Now I'm just zooming out of the entire window. So अगर आप देखेंगे तो sagittal view में भी you can see what I have marked in the coronal view. It is coming as red and blue line markings. I hope that's visible. If I want, I can again mark in the sagittal view also.
So I'm marking this as my maxillary section. Zoom in here. Reduce the brush diameter. Then I'm going to select maxilla and cover this place. Right. I'm going to zoom out and then click on the spine and mark the spine here. So once you're okay with कि आपने at least एक 5-7 slices पे marking कर ली है, ideally it is good to mark on slices 5 or above so that you know कि आपकी accuracy बनी रहे ताकि. So once you're okay with it, what you then do is you click on OK. Three parts are visible. You have your mandible, you have your maxilla, and you have your spine. What we'll do is we will recreate all the three so we can visualize them in 3D. I'm going to select all the three, select calculate part, and OK. So you have your three different masks. Spine is not relevant to us, so I'm just closing that. You have your condyle segmented. You have your maxilla and mandible segmented. Right. So sometimes what will happen is अगर आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा, if I zoom in, certain section of the maxillary tooth has become a part of your mandible. So if I go in, if I have to understand, what I'll do is I'll click on this point and it will take me to the region. ये कहाँ पे आपको दिखेगा वो आपको मास्क पे वही जगह पे गाइड करेगा. So you can see this region has become a part of your mandibular mask. So what I'll now do is I will show you here. The correction, manual correction has to be through multi-slice edit. So what I'll now do is, since I want it to be perfect, I will zoom in on it. I will select multi-slice edit. My mask is mandible. I want to remove. I will use lasso. So I'm going to follow the border.
If you notice, I'm not drawing on each slice. I'm leaving a couple of slices in between and then drawing. If you zoom in, then you see that there are still a few pixels that have been left and not covered. So what I'll do is I'll again remark in that region so that it covers all the pixels. And then keep scrolling. I would want to remove this region as well. So I'm just rechecking. I'm happy with what I have marked. Then once you're satisfied with what you've marked, you can click on OK. So that section is removed. Now what I'm going to do is I'm going to again calculate the part. I will hide the maxilla first. You can see कि ये वाला पूरा section आपका extra आया था. Now I'm going to recalculate this mask. Calculate. I select my mask as mandible and OK. मैंने पुराना मैंडिबल हाइड किया है तो आपको दिखेगा कि वो जो टूथ आया था ऊपर वाला वी हैव रिमूव्ड इट. So whatever small pixels that get carried forward into your new mask, you can always go back to edit mask or multi-slice edit and remove them. Right? I hope this is clear. Any doubts in this? Yeah, looks good. say कि आपके पास ये पहले वाला I'm going back to one of a previous created crop test वाला mask, the cyan mask rather, let's say, right? Just one second. Right, so you had the cyan mask created already. ठीक है, but अभी आपको क्या करना है? You want basically now your requirement is you want the spine, you want your cranium का section, and you also want the maxilla, but you just want to remove your mandible out of it. So how will you do that? Like you've already created your mandible separately, you have your masks prepared. So you will go back to again split mask and do it all over again, or you would want, of course, you would want a more easier way. Now that you've already created multiple masks, you would want some basic operations that help you subtract the mandible out of this, your original mask, right? So we have something called as the Boolean operations to help us do that. So basically, from the cyan mask, I want to remove the mandible. What I will do is under the segment menu, I will go to Boolean operations, right? I will select my first mask. My original mask is cyan. I want to remove the mandible out of it. The operation that I want to do is minus, right? So you have three options. Either it is minus, like minus addition, or intersection, that is overlapping of two masks. Right now I want to minus. So let my mask be test 2. I'm going to hit on apply. So as you can see, a new mask called as test 2 has been created. I will calculate this part. Okay. Yes. So if I go here now, you can see a new mask minus the mandible has been generated. So
in case you have multiple masks and you want to just remove one entity from the other, Boolean operations are the way to go. They really help you and make things faster for you. Right. So sometimes what happens is your mask or the quality of your threshold, because your CT scan is pixelated or something, so the quality of the 3D model generated will not be smooth always. So in case you want to further smoothen the model, or you want to further enhance the look of the model, you can go to 3D tools. You have option called as smooth and wrap to help you with that. So what I will now do is I will smooth this model just for your reference. I'll go to smooth. Again, the first thing I do is I select the mask. Then, so generally for smoothing, we recommend that you do not exceed the iteration numbers of 3, because after the iteration number of 3 and anything above that, the quality of the model, quality as in the accuracy of your model, will reduce. So it is generally recommended that you stay within the iteration number of 3. I would want to preserve my original mask so I can uh, visualize the difference and compensate the shrinkage. Basically, what it does is it'll fill your holes. But generally, ideally, we do not use this option to compensate the shrinkage. You can try both ways and then visualize the difference for yourself. And I am going to click on OK. I'm hiding the previous mask. So since our model quality was already good, we can't see much difference here. But let me switch on the contours. And we will see the difference using the scan. So I'm going to come out of it. I am hiding all the other masks. So there is very slight difference that you can observe in the contours if you see at the very borders when I hide the original and the new. So you can see the edges has become slightly, very slightly smooth. Is the difference visible? No. Okay, I'll just zoom in further. Maybe if you choose a different color, margin is. Yes, I can do that. Yes, yes. I will change this color. So now I think the difference is visible. You can see the pink is the previous, the green is the new. Hmm. So the sharp, if you could see, I'll just go here. This sharp pixelation has been reduced slightly into a more smoother, rounded circle. Hmm. Yes, appreciate now. So again, yes, yes. So the intensity will keep changing. Since I had chosen only the iteration number as 1, so we can see very minute changes as you increase the what we say, the iterations, the compensation or the smoothing effect will increase. But as I said, as you can see, there is a difference in the contour. If we increase the number more, then the anatomy accuracy will be impacted as well. So always make sure that you keep checking with your contours every now and then to understand कि आपकी accuracy को कुछ impact हुआ है या नहीं हुआ है. Right? Yeah. So we are done with this. Now, what if we want to export this model as an STL? So the option to export is available. This is the object window. In the project management tool, you have two major windows.
One is the mask window, wherein your images, masks, and measurements are there. The other is your 3D object window. So under the object window, again you will have multiple options. So when I click the drop down here, I will have an option called as Export STL. I will select that. I'll have to name the file that I wanted to. So remember that before selecting the drop down, first select the part you want to export. So I had selected, I want to export, say, the mandible only. So I will select my mandible. Then I will go to the drop down. Then I will click on Export STL. And then I will save the file as mandible. Right. I will set my path. My path had to be KGME software training. I want to save it in the patient folder, mandible. I click on save. So if you want to check कि आपका part export हुआ है या नहीं, you can always go to the log and see कि आपने कौन सा project कैसे हुआ था. So this is the log basically is कि which step you performed after what. So if you want to keep checking कि आपने कौन सा step कब perform किया था, कौन सा mask कब create किया था, your log is your guiding tool. So yes, you have so I'm just wrapping up the today's session. So we learned a lot of different ways of segmenting mandible from maxilla. First, we did region grow, then we did crop mask, we did split mask, we learned Boolean operations. We understood how to improve the quality of the model further by using 3D tools. Of course, I just showed one part of 3D tools. As we proceed, we will learn about the different other tools available under the 3D tools option. But for today, this is it. Let me know if you have any queries or you would want me to solve any other options for you. Anybody wants to ask something? Are we all good? So if you are trying, what I would suggest is to like when you do your training at your end, I would suggest is if you see यहाँ का इसका condyle का shape थोड़ा condyle का bone missing है, but just as a practice, if you can try tracing the condyle using multi-slice edit, whatever bone segment that you see, and try closing it, so that'll be a good practice for multi-slice edit is what I feel. Another important thing if you want to try multi-slice edit in a better way is आपके जो maxillary maxilla होता है उसका जो ये कहते हैं ना maxillary sinus वाला region होता है. If you see the front and the back side, let me highlight here, the bone is very thin. So generally वो आपके mask में कभी नहीं आएगा. Like very rarely will it ever come in your mask. This is always to be hand drawn by you. So another another place where you can try your multi-slice edit is these two junctions. Just below your pterygoid plate internally. So let me just show this on the scan. So I will zoom in here. I will hide my contours so you can see. So if you see, आपका bone यहाँ पे है, but आपके mask ने उसको correctly लिया नहीं रहेगा. You see, these some fragments are left. So these thin fragments have to be always filled manually. So you can try at these regions to fill in. So yes, I mean that's it for the day. Anything else? What time do you all want? Vignesh, in the evening, what time do you want to solve your It's queries? from 5. 5? 5 o'clock. 5, Okay. yes. 5 is good, Darinita. Yes, ma'am. Ma'am, अगर आज थोड़ा late हुआ तो चलेगा because at 3 o'clock I have another training. So it might extend. If it doesn't extend, then I'll drop in a message in the group that we can continue at 5. Otherwise, 6 o'clock. Is that okay for today? Yes, it's Okay. fine. Okay. Tomorrow again we'll be meeting at 11.
Sure, ma'am. Okay, we will do that. Okay. Ma'am, also another thing is इसके लिए आपको अगर if you want to practice the tutorials that you can look forward to is I think Simon करके एक tutorial रहेगा और एक obturator का tutorial रहेगा आपके इसमें. I think I've mentioned it in the module also. So the tutorial. किसका tutorial? मैम कल जैसे मैंने वो आपको 2 tutorial दिए थे ना मिमिक्स से प्रैक्टिस करने के लिए. हाँ. वो वैसे ही सेम ट्यूटोरियल आज अगर आप मिमिक्स के हेल्प में जाएंगे तो यू कैन यूज द ट्यूटोरियल साइमन एंड ऑब्चुरेटर टू अंडरस्टैंड. ओके. यस. उसके हेल्प में ही इतने ट्यूटोरियल्स हैं? हाँ मैम, उसके हेल्प में ही आपको एटलीस्ट 6-7 ट्यूटोरियल्स तो है ही. ओके. तो यू कैन यूज दीज 2 ट्यूटोरियल्स फॉर टुडे. आपको बट वो बेसिक होंगे. आई डोंट थिंक दे इंक्लूड स्प्लिट मास्क एंड एनीथिंग लाइक दैट, बट यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो. अगर उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल. ठीक है. ठीक है मैम. So I will drop in a message if we can connect at 5. If not, then definitely at 6. Okay. Sure, ma'am. Yeah. Thank you.